वेलकम टू व्यूअर माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिंग्विस्टिक वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। अगर हम बात करें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, व्हाट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन द एक्ट ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड। कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, जिसमें हम लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते, जिसमें हम वर्ड यूज़ नहीं करते, बल्कि हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर और आर्टिफैक्ट से बातचीत करते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अगर हम बात करें तो वर्ड यूज़ नहीं करते। वर्ड्स के अलावा आई कांटेक्ट होता है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होती है। एवरी डे we respond to thousand non-verbal cues and behaviors including posture, facial expressions, eye gaze, gestures, tone of voice, from our handshakes to our hairstyle. Our non-verbal communication reveal who we are and impact how we are relate to other people. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस की। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की 9 टाइप्स हैं, 9 टाइप्स। Scientific research on non-verbal communication and behavior began with the 1872 publication of Charles Darwin's The Expression of the Emotions in Man and Animal. Since that time, abundant research has been conducted regarding the types, effects, and expressions of unspoken communication. Effects and expression of unspoken communication and the behavior. While these signals can be subtle that we are not consciously aware of them, research has indicated 9 types of non-verbal communication. 9 types में आ जाता है facial expressions, gestures, पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक कहते हैं आपके बात करने को, टोन को, लाउडनेस को, बॉडी लैंग्वेज, प्रॉक्सिम्स, पर्सनल स्पेस, आई गेज, हैप्टिक। हैप्टिक कहते हैं टच करने को, अपीयरेंस एंड आर्टिफैक्ट्स। अगर हम बात करें फेशियल एक्सप्रेशंस की, फेशियल एक्सप्रेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कंसीडर्ड हाउ मच इंफॉर्मेशन कैन बी कन्वेड विद अ स्माइल और मतलब जब आप किसी से मिलते हैं तो अगर वो खुश है तो चेहरे से पता चलता है, अगर वो आपसे नहीं मिलना चाहता, नाराज़ है, तो उसके माथे की तेवरी चढ़ जाएगी, तो फ्राउन हो जाएगा। तो फेशियल एक्सप्रेशंस की अगर बात करें तो ये आपके स्माइल और फ्राउन को शो करते हैं। द लुक ऑन अ पर्सनस फेस इज ऑफन फर्स्ट थिंग वी सी, इवन बिहेवियर can vary dramatically between cultures. The facial expressions for happiness, sadness, anger and fear are similar throughout the world. पूरी दुनिया में फेशियल एक्सप्रेशन तो सेम है, गुस्से के, खुशी के, नाराज होने के। उसके बाद हम आते हैं जेस्चर्स की तरफ। Gestures, deliberate movement and signals are an important way to communicate meaning without word. Common gestures include waving, pointing, giving thumbs up sign। मतलब जब आप किसी को साइन देते हैं, किसी को आप गुड के लिए ऐसे साइन देते हैं, बैड के लिए ऐसे साइन देते हैं, ये जो आप साइन सिंबल्स की लैंग्वेज यूज़ करते हैं ये आपके जेस्चर्स होते हैं। या आप हाथ हिलाते हैं, इस तरह शेक करते हैं, हाथ शेक करते हैं, या ग्रीटिंग के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो ये सारे आपके जो है ना साइन होते हैं, ये आपके जेस्चर्स में शो होते हैं, ये आपके जेस्चर्स में इन्हें इंक्लूड किया जाता है। और जेस्चर में हम लोगों को जो है ना देखते हैं। अगर जेस्चर्स की बात आ जाए तो टीचर जो लायर्स होते हैं वो आर्गूमेंट कर रहे होते हैं जब अपने क्लाइंट से, तो वो आर्गूमेंट के दौरान जब जज के सामने जुडिशरी में पेश किया जाता है या कोई गवाह को पेश किया जाता है, तो वो फिर जो वकील होता है वो उन्हें जेस्चर्स के ज़रिए जो है ना कंट्रोल करता है, जेस्चर्स के ज़रिए उन्हें डील कर रहा होता है, और जेस्चर्स के ज़रिए ही वो अपोजिट का जो गवाह, अपोजिशन का जो अपोनेंट पार्टी का गवाह है उसे डराने की कोशिश करता है। मीन जेस्चर से आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है पैरालिंग्विस्टिक्स। पैरालिंग्विस्टिक्स रेफर टू द वोकल कम्युनिकेशन दैट इज सेपरेट फ्राम द एक्चुअल लैंग्वेज। दिस फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड फैक्टर्स सच एज टोन ऑफ वॉइस, लाउडनेस, inflection and pitch. Consider the powerful effect that tone voice can have on meaning of a sentence. When said in a strong tone of voice, listeners might
interpret a statement as approval and enthusiasm. The same word said in a hesitant tone can convey disapproved and lack of interest. तो पैरालिंग्विस्टिक आपकी कम्युनिकेशन से हटके आपका वर्ड्स का यूज़ है वो नॉन वर्बल में ही आ जाता है। मीन आप या तो आप सरगोशी करते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा लाउडली वॉइस में बोलते हैं, मतलब बोगस वर्ड्स बोलते हैं। इसी तरह अगर आ जाए बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर्स की बात, बॉडी लैंग्वेज एंड मूवमेंट कैन आल्सो प्रोवाइड अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन। रिसर्च ऑन बॉडी लैंग्वेज हैज़ ग्रोन सिग्निफिकेंटली सिंस 1970 with popular media focusing on the interpretation of defensive postures such as arm crossing and leg crossing, especially after the publications of Julius Fast's book Body Language. While these non-verbal communication can indicate feeling and attitude, research suggests that body language is far more subtle and less definite देन प्रीवियसली बिलीव। मतलब बॉडी लैंग्वेज की अगर बात आ जाए, जब आप बैठते हैं आपके क्रॉस लेग्स अगर हैं, क्रॉस लेग्स फैला के बैठते हैं, क्रॉस लेग्स करते हैं या क्रॉस आर्म्स करते हैं या आर्म्स के सहारे बैठते हैं, तो वो आपकी बॉडी मूवमेंट को शो कर रहा है, तो वो आपके पोस्चर को शो कर रहा है, वो आपकी कंडीशन को बता रहा होता है, वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉक्सिमिक्स की, प्रॉक्सिमिक्स बेसिकली पर्सनल स्पेस को कहते हैं। दिस इज आल्सो नाउन प्रॉक्सिम्स and is another important type of non-verbal communication. The amount of distance we need and the amount of space we perceive as belonging us to influenced by the several factors. Among them are social norms, cultural expectations, situational factors, personally characteristics और level of familiarity. मतलब प्रॉक्सिम्स का मतलब ये होता है कि टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान एक स्पेस होती है। जब आप पेरेंट्स के साथ बैठे होते हैं उनके दरमियान स्पेस होती है, हस्बैंड वाइफ की और स्पेस होती है, फ्रेंड्स की और स्पेस होती है, फीमेल फ्रेंड और मेल फ्रेंड की और स्पेस होती है, और इसी तरह बॉस और उसके मुलाजिम की एक स्पेस होती है। इसी तरह टीचर और स्टूडेंट भी एक स्पेस से बात करता है, तो इसे हम प्रॉक्सिम्स कहते हैं। उसके बाद आई गेज की बात करें तो आई गेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। द आइज प्लेज अ रोल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन which such things as looking, staring, blinking being important cues. For example, when you are encounter people or things that you like, your rate of blinking increase and your pupils dilate. People's eyes can indicate the range of emotions including hostility, interest and attraction. People also utilized eye gaze as a means of determining if someone's being honest. Normal steady eye contact is often taken as a sign that person is telling truth and trustworthy. मतलब हमारे यहाँ एक ये चीज़ भी देखा जाता है कि आई को, आंखों को देख के वो कहते हैं आपकी आंखें आपका साथ नहीं दे रही, आंखों से जज कर लेते हैं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। फिर जब आप वो चीज़, जो चीज़ आपको बहुत प्यारी लगती हो, जब वो आपके सामने आ जाए तो आपकी आंखों में ब्लिंकिंग छपकना शुरू कर देती हैं, बहुत ज़्यादा छपकती हैं, उनकी जो छपकने की शरह है वो बढ़ जाती है। और आंखें आपकी, और जिससे किसी से आप नज़रें चुराना चाह रहे होते, जिससे आप बात नहीं करना चाह रहे होते, उससे आप नज़रें चुरा रहे होते, ये सारी आई गेज है। आई गेज, आई कंटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। ये आपको आपकी रियलिटी के बारे में बताता है कि आप सच बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी आंखों से लोग जज कर लेते हैं और आपका इंटरेस्ट, लाइक और डिसलाइक का आंखों से बता दिया जाता है। आई कंटेक्ट से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हम देखते हैं हैप्टिक्स को। हैप्टिक्स कम्युनिकेशन थ्रू टच। हैप्टिक्स का मतलब होता है टच, तो ये इंपॉर्टेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिहेवियर में। टच कैन बी यूज्ड communication, affection, familiarity, sympathy and other emotions. In her book International Communication Everyday Encounters, author Julia Wood writes that touch is also often used to communicate both status and power. High status individuals tend to invade other people's personal space with play a role how people utilize touch to communicate meaning. Women tend to use touch to convey care, concern and nutrients. Men on the other hand are more likely to use touch as assert power, control and over others. For example, जब कोई आपके सामने रो रहा है, आप बगैर बात किए उसके सर पे हाथ रखते हैं, उसे टच करते हैं, उसे ये एहसास दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं,
आपके साथ हूँ मैं, तो वो जो टच करना है वो बेसिकली आपका हैप्टिक साथ है। उसके बाद हम बात करते हैं अपीयरेंस की। आवर चॉइस ऑफ क्लॉथिंग, हेयर स्टाइल एंड अदर अपीयरेंस फैक्टर आर आल्सो कंसीडर्ड अ मीन्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कैसे? अगर आपने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं तो लोग आपको देखते हैं, कहते हैं कितने अच्छा सूट डाला हुआ है। अगर आपकी हेयर स्टाइल अच्छा है तो लोग कहते हैं कितना प्यारा हेयर स्टाइल है। अगर आपने अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ है तो आप लोग खुद ब खुद आपसे पूछ भी लेते हैं कौन सा परफ्यूम लगाया। अगर वो आपसे नहीं पूछेंगे तो जब आप वहाँ से गुजरोगे तो वो आपस में बात करेंगे, यार कितना अच्छा परफ्यूम लगाया, तो कितनी अच्छी फ्रेगरेंस थी। तो ये जो आपकी अपीयरेंस है बेसिकली ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ये आपकी अपीयरेंस देख के लोग आपके एक्सपीरियंस देख के आपसे बात करना चाहते हैं, बात करने पर मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं आर्टिफैक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स एंड इमेज आर आल्सो टूल्स दैट कैन बी यूज टू कम्युनिकेट नॉन वर्बली ऑन एन ऑनलाइन फोरम। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट सेलेक्ट एनी avatar to represent your identity and to communicate information about who you are and the things you like. People often spend a great deal of time development a particular image and surrounding themselves with objects designed to convey information about the things that are important to them. Uniforms are an examples can be used to transmit our tremendous amount of information about a person. A soldier will a soldier will don fatigues. A police officer will wear a specific uniform, and a doctor will wear a white lab coat. At mere glance, these outfits tell other what that person does for a living. The make them powerful फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आर्टिफैक्ट से आप पहचाने जाते हैं। यूनिफॉर्म से पहचाना जाता है जी आर्मी का ऑफिस सोल्जर है। यूनिफॉर्म से पहचाना जाता है ये यूनिफॉर्म ही आपका आर्टिफैक्ट है, ये पुलिस ऑफिसर है। यूनिफॉर्म से पहचाना जाता है कि ये रेस्क्यू का मुलाजिम है, और यूनिफॉर्म से पहचाना जाता है कि ये डॉक्टर है, और कोर्ट से पहचाना जाता है ये वकील है, और इसी तरह वेस्ट कोर्ट से पहचाना जाता है ये टीचर है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आर्टिफैक्ट्स में ही